Namaste ji, namaste. Welcome to Courtroom. My name is Sahaj. If you're preparing for the DULLB 2024 examination, that is to gain admission into the 3-year LLB program specifically under the Faculty of Law, Delhi University, this session is going to be fruitful for you. This session will be in English, that is in some portions I'll be using Hindi, some portions I'll be using English. Just a disclaimer at first because otherwise people complain later. अब यहाँ पे चक्कर क्या है कि if you're preparing for DU LLB specifically to gain entry into DU, of course, sad news is that the exam called DU LLB, well, it is no more. Well, what do you mean? So DU LLB used to be conducted under the DUET, that used to be Delhi University Entrance Test. Now this primarily went on from, अच्छा पहले तो एग्ज़ाम जो होता था in the decade gone by, in fact 2010 to 20, in fact it used to be conducted as नाम ही इसका DULB होता था. Then it got clubbed under the Delhi University Entrance Test 2018-19-ish के आसपास. तो वहाँ पे बहुत सारे अलग एग्ज़ाम होते थे, एक LLB का भी एग्ज़ाम होता था. Now DU is conducting admissions under CUETPG for the 3-year LLB. इस साल के लिए तो अभी Delhi High Court is hearing the matter. इस साल की admission to the 5-year LLB is through CLAT. अगले साल का देखते हैं whether they opt in for CUET UG, but our exam primarily is CUET PG for the 3-year LLB. Hopefully that is clear. Now under the CUET PG there are multiple examinations. So for example, you want to become an Acharya of Jyotish, you will have to give a specific entrance. You want to study history, master's level पे you will give a specific entrance. You want to study political sciences, you will be taking an exam that is dedicated to political sciences. However, LLB, it doesn't have any damn code attached to it, and that is the main problem with CUET-PG. It is, since every coin has two sides, so there are pros to it, there are cons to it. We will focus on the pros instead of talking about the negatives here. So what do you have to do to get to the syllabus? First and foremost is put in CUET-PG in Google. You will go to the CUET-PG's website. This is the official website. सरकारी विश्वविद्यालय का एग्जाम देने जा रहे हैं. Always refer to official सरकारी sources only. You go here, you go to information and you go to syllabus, right? It says here, it will tell you Acharya Common Humanities Languages MTech Science. So everything, if you open these documents, you will find that everything has their own set exam and there are question paper codes. Now you'll have to click on common. I clicked on common there and a document such as this will open. तो कहता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट पढ़नी है तो COQP 01 दे दीजिएगा, तो उसका सिलेबस आपके सामने ये आपको मिल जाएगा. However, we will need to go. पिछले साल तो इन्होंने बहुत बड़ा कॉमेडी शो करा था कि COQP 11 का सिलेबस जो है वो 12 में डाल दिया था और 12 वाला 11 में डाल दिया था. That caused certain amount of confusion for I think about 1 to 2 days something before they corrected it. Now, syllabus for general paper. So this gives you a clue as to what this paper is going to be, right? This is a general paper. Now, general paper के अंदर, so if you attempt this paper, you can take admission to 3-year LLB, you can take admission to East Asian Studies, you can take admission to African Studies, you can take admission to I think 4 to 5 odd courses under DU via the same paper. आप कहेंगे ये क्या लॉजिक है, 3-year LLB इसके अंदर क्लब आउट क्यों करिए? कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, बट वो बात की बात है. अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको भी दी है जनरल पेपर की, ये मैं 22 और 23 के बेसिस पे दे रहा हूँ मैं आपको. दिस इन्फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट टू चेंज, क्योंकि इस साल जो एग्ज़ाम डेट जो कि ऑलरेडी अनाउंस्ड है 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा. सो रफली जस्ट प्रिज्यूम इट टू बी ऑन द 13th और द 15th ऑफ मार्च, रफली स्पीकिंग. 15 मार्च को आप समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करिएगा. आप अपने दिमाग में एक निर्धारित ये डेडलाइन आप रख लीजिए और इस पर निर्णय ले लीजिए कि मेरे को इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी. सिंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट समझना भी पड़ेगा कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है. तो यहाँ पे जो मैंने आपको भी प्रक्रिया समझाई है, वहाँ पे जाके इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके जस्ट गो थ्रू इट वंस. सो यू विल फाइंड द COQP 11 पेपर हैज़ English comprehension में English grammar, usage errors, jumbled para, etc. I won't read out the entire syllabus. But broadly English जो कि हर competitive exam में सदा से ही आती है, सदा ही आती रहेगी.
आप इस एग्जाम को हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, तो हिंदी पाठ बोधन कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा, हिंदी के जो नॉर्मल जो आपके व्याकरण में ये वाक्य शुद्धि, आपका पाठ बोधन, अनुलोम विलोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो जो भी हिंदी के अंदर जो नॉर्मल सिलेबस आता है। बट फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन ऑफ कोर्स आप इंग्लिश में नहीं अटेम्प्ट कर सकते, फिर आपको हिंदी में ही करना पड़ेगा। सो इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड कि आप इस पेपर को हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि अगर इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश वाला काम करेंगे इस सेक्शन का, और हिंदी में करेंगे तो ये काम करेंगे, और बाकी सिलेबस फिर कॉमन हो जाएगा दोनों मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस के लिए। सो यू हैव जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। सो व्हाट दिस इज करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में भारत रत्न के ऊपर क्वेश्चंस, नोबेल प्राइज के ऊपर क्वेश्चंस, नोबेल प्राइज पहला किसको मिला था, सो स्टफ दैट इज स्टैटिक इज नॉट एवर गोइंग टू चेंज। फॉर एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट नोबेल लॉरिएट from India, that never changes. That is, in my definition, what I call as static GK. Like the dam that is situated at the highest altitude in India, that is amongst altitude के अंदर जो highest dam है, and then the longest dam, some questions on lakes, some questions on tiger reserves, all of that is static GK, all right. So they say literature, history, personalities, sports. I'll come to Indian Constitution, national, international economy. All of this is current affairs and static GK. It includes science as well. So basic stuff about basic knowledge about the human body, neurons, protons, atoms, etc. is required. ये नहीं वो 11th 12th वाली organic chemistry वगैरह कुछ नहीं करनी. Just basic stuff. Nothing much more, nothing much complicated. And then you have the Indian Constitution as well. तो इसमें geography, culture, trade awareness वगैरह लगी हुई, which is pretty much standard static GK की layers of atmosphere वगैरह बता दो, stuff such as that. Then you have the Indian Constitution. Indian Constitution and polity is forever asked in almost all exams, so they've clubbed it under general knowledge. तो Constitution तो पक्का तैयारी करनी ही करनी है. Okay. Then you get computer basics, so you will get questions on Outlook के shortcuts, gigabit Ethernet की maximum speed. आपका ये क्यों पूछ रहे हैं? अगेन मैं उस लॉजिक में नहीं जा रहा, क्योंकि इसके बाद इसके ऊपर इसी लॉजिक को लेकर हमने पिछले साल बहुत लड़ाई लड़ी थी, कोर्ट में भी गए हम, दिल्ली हाई कोर्ट में भी गए, और अखबारों मीडिया को भी बोला था कि इसको इशू को कवर करो, सब कुछ हुआ था, लेकिन अब वो पिछले साल की बात है, रात की तो बात गई. वील बी फोकसिंग ऑन 24. तो इसके अंदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, स्टफ सच एज दैट, ये आपको तैयारी करनी है, क्योंकि वेल they'll give you which of the following is not a web browser, इस साल का क्वेश्चन है. अब ये सब लॉ एंट्रेंस में क्या कर रहा है, गॉड ओनली नोज. हाउएवर यू विल हैव टू कवर इट, तो कंप्यूटर्स कवर आउट करना है. Then you go to general aptitude and logical reasoning. So general aptitude is maths for them. So officially they're not calling it maths, but it is maths. It's just quant, basic quants. Again, no integration, no derivation level stuff, but riddle based maths, primarily time and distance, time and work, calendars, clocks. Calendar clock तो calendar तो खैर logical में आ गया mostly. They have given you each and every bit of the syllabus, from which they usually ask 1 to 2 questions each per topic. If you can't figure out a topic, you leave it, but then you strengthen out the other topic in compensation for that. So that is one way to prepare it. यहाँ पे आपको सारा का सारा ये syllabus मिल जाएगा. Download करके please go through it yourself, because I don't like reading from the screen. Logical reasoning, again, very standard stuff, blood relations, direction test, coding, decoding, number series, etc. Again, which is, you know, almost all the time required for any damn competitive exam that you are going to be attempting. So this is it. However से पहले we'll just come back to our document and then we'll discuss that before going into however. We'll go for the discussion first, and then एक however है इसके अंदर बीच में, कि जो खैर अच्छा चलिए however को complete ही कर लेते हैं. जो पहले मैंने आपको सेंटेंस शुरू करा था कि एग्ज़ाम डेट वगैरह अनाउंस हो गई, तो एग्ज़ाम डेट इसलिए अनाउंस हो क्योंकि स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया था कि भैया ये तो एग्ज़ाम हमारे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के साथ क्लैश आउट हो रहा है, जो मार्च वाली जो बात मैंने आपको कही थी. तो होपफुली हमारी भी अखबारों और कोर्ट केस और ये सब ये जो इतना शोर जो वगैरह जो मचाया था, इससे कि 2024 में क्या पता दैट दे कम बैक टू देयर सेंसेस, दैट दे actually have a dedicated paper for a 3-year LLB. तो जिस पेपर का कोई कोड नहीं है, they are being tested, those papers are being tested under CUETPG-11. That is your official title for this exam. Alright. अच्छा, आप कहेंगे नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, लॉ पूछनी क्यों है, क्योंकि लॉ तो हम लॉ स्कूल में जाके पढ़ेंगे, पहले क्यों लॉ टेस्ट कर रहे हैं. Absolutely agreed, valid viewpoint, not getting into a debate on it. So DULLB की जो cutoffs जो होती थी out of 400, when I say validly agreed, not getting into a debate, doesn't mean
that your viewpoint is absolutely correct or my viewpoint is absolutely correct. It is just one viewpoint, and freedom of speech and expression 19(1) के अंदर सबके पास है, and everyone is allowed to voice out their opinion, and it is absolutely fine of whatever is happening. Now, so out of 400, you had these cutoffs in 19 with. So the DULLB used to go berserk with law. In fact, it was not even fair to expect doctrine of transferred malice कहाँ दे रखी है, section 7 Hindu Marriage Act में क्या दे रखा है. To ask this in a law entrance is pretty much, आप पहले सेमेस्टर के ही सारे सेक्शन वेक्शन के अंदर घुसे, मतलब LLM लेवल थोड़े से क्वेश्चन जो आते थे वो बहुत बहुत टफ लेवल के आते थे लॉ रिलेटेड. तो कट ऑफ 19 में गई 222, देन कट ऑफ 20 में गई in 227. So people started getting comfortable with the paper. 18 में it used to be 234 if I can remember it correctly. Then it rose again. It went to 234, and then in 23, in 22 only. This is 21. अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती करी हुई मैथ्स में यहाँ पे. This is यहाँ पे in 21 it went to 234, 254 चला गया in 22. This was in October 22, not almost 1 year ago. Not very far away मैं बोल रहा हूँ, but October 22 is almost last year के पेपर में. यहाँ पे ये जो कट ऑफ 234 से 254 गई थी, there were allegations of a scam which were very valid as well, because many people mainly related and connected to the so-called political spectrum of the country, and they got a lot of their candidates got the topmost seats from one specific center, and the cutoff shot up by 20 marks, unheard of in a competitive exam. So actual cutoff अगर आप लगाएं तो roughly around 240 की range में थी. For of course all of these cutoffs are unreserved. Now here in CUETPG, तो पहले इस पेपर का नाम होता था PGQP 40 in 22, but DU didn't opt it in 22, so we don't have the cutoff idea. Now this paper is called with the same syllabus. It is called as COQP 11. यहाँ पर 226 गई है unreserved cutoff. As मैंने RTI लगाई हुई है. I don't know why they are replying, why they are not responding to it. If they do not respond in another week or so, I believe the time will lapse, and then we can go in for the first appeal. तो 226 आई थी. So this is very opaque data. This is just based on comments and our own student data कि last 226 पे लोगों को admission मिली है. Spot round में I have one student who got it at 225, but others didn't get at 225. So there were many more at 225, but well, no, not. But one student confirmed कि उसको admission मिली है 225 but then this is again, this is opaque, मतलब information है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने इस साल कोई consolidated list print out नहीं दिया या कुछ मतलब कुछ करा नहीं हुआ. तो this is, you can have an estimate that 226 out of 400 is the unreserved का cutoff for this year mostly. Having a look at this trend, you can add somewhere around the 231 to 236 marks unreserved for next year, because people will get comfortable with this paper as well. They'll prepare it accordingly, क्योंकि ये जो syllabus change जो यहाँ पे बताया गया था, मार्च में जाके इन्होंने कहीं जाके confirm कर दिया, तो जून में तो इन्होंने पेपर ही ले लिया इस साल का. So people are much more, people will be much more well prepared in advance. You can expect एक 5 नंबर की boost या 4 नंबर की boost, which is standard for any competitive exam. So roughly speaking, अगर आप unreserved category से paper attempt कर रहे हैं, roughly speaking, why not hypothetically just assume it at 240 that you need 60% out of a 400. If you get 60%, you will be very, very safe in securing a seat. 230 maybe, of course, you'll be getting most likely getting a seat. However, having said that, आ गया हमारा however. So this is a 50-50 chance that a law entrance gets introduced, because they have taken the feedback from these students to reschedule this exam and just get it done and over with way prior than the final semester exams. If the faculty of law and other faculties of law have protested against this entrance, they've given in writing कि भैया थोड़ा सा एक law entrance वगैरह बना लो, तो क्या पता दिसंबर जनवरी में जाके पता चलेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते. सो दिस इज जस्ट अ 50-50 चांस. आप कहेंगे अरे भाई डर फैला रहे हैं, कोई डर वर नहीं फैला रहे. इट्स अ 50-50, मतलब
कॉइन टॉस है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, क्योंकि ये जय सरकार है यहाँ की सरकार का, सरकारी डिपार्टमेंट का कुछ नहीं हम कह सकते. Alright. So exam date already is announced. Based on that, since they took this feedback, maybe they have taken this feedback as well. But God only knows. They do not respond. Our next hearing for our case is in October, but that petition will now get dismissed because we were primarily fighting for the 2023 batch, because it's now become infructuous. क्योंकि exam हो चुका है, admissions हो चुके हैं. So most likely we'll just get it dismissed, and that's just about it. So 11 March to 28 March is your exam date. Hopefully I've gotten this correct. वहाँ तो थोड़ी सी गलती हो गई थी. Any which way. So marking scheme remains the same. Total is 400 plus 4 and minus 1. Alright. Now once you go through the syllabus, you will find पहले क्या होता था? The syllabus used to be English, Legal, Maths and Logical, CNGK. DULLB में. Now under CUETPG, under your general paper, English remains the same. Legal used to be 50 to 65 questions. That legal has been replaced with computers specifically. However, computers से बहुत कम question आते हैं, 9 से 10 question आते हैं. 50 to 65 of these questions of legal, they are now being asked in maths and logical. So primarily speaking, this exam now, as of right now, as of today, मैं आज के syllabus के बारे में से हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे 27 सितंबर के हिसाब से. It is मैथ्स एंड लॉजिकल का पेपर मेनली विद अ कपल ऑफ थोड़ी सी इंग्लिश, थोड़ी सी स्टैटिक जीके, थोड़ी सी सीए. आप कहेंगे ये तो एसएससी बैंकिंग एग्जाम जैसा दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है, तो हाँ शायद पीछे से कुछ आई थिंक आवाज़ आई थी, सो आई जस्ट हैड टू सी दैट. एनी विच वे, सो सी एंड जीके रिमेन्स द सेम, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके. दिस प्राइमरली इज द मेन डिफरेंस. लीगल को रिप्लेस कर कंप्यूटर में मैथ्स लॉजिकल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है. और आप कहेंगे अरे जी मैथ्स छोड़ के तो हम लॉ करने आए थे, अब ये यहाँ पे भी इन्होंने तमाशा कर दिया है. बेसिक मैथ्स से उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, थोड़ा बहुत मैंने आई थिंक इस चैनल पे डिस्कस किया हुआ है, पूरा तो इस साल नहीं कर पाया मैं. हाउएवर इफ़ यू वांट द लिंक टू द क्वेश्चन पेपर, इट शुड बी डाउन इन द फर्स्ट कमेंट. तो वैसे आई थिंक आई शेयर्ड इट लॉन्ग बैक ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल. PGQP 14 COQP 11 का दोनों का क्वेश्चन पेपर विद इट्स करेक्ट आंसर कीज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट. टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, नहीं तो मैं नीचे भी I'll leave the link to the Telegram channel there. You can just scroll up and you will find the question paper. It is permanently stored there, so you can download this. All right. So 50-50 chance है, only God only knows क्या है. However, we will now want to strategize our preparation because only 5 months are left. October, November, December, Jan, February. क्योंकि मार्च में तो आप पेपर ही दे रहे होंगे, तो मार्च को आप काउंट ही मत करिए. अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आधे से ज़्यादा दिसंबर भी आपके पास नहीं है. तो रफली स्पीकिंग अगर आप लगाएं तो 4.5 से 5 महीने. क्वेश्चन नंबर 1, कैन प्रिपरेशन बी डन फॉर दिस पेपर इन 4.5-5 महीने? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. 3 मोड रहते हैं प्रिपरेशन के. कैसे? एक तो है सेल्फ प्रिपरेशन, बिकॉज देयर इज नो एग्जाम ऑन द प्लैनेट दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड by your own, provided that you can self-pace, self-manage and arrange all the resources etc. on your own. And जब भी हम पूछते हैं कि इस एग्जाम के लिए कोचिंग चाहिए कि नहीं कोचिंग चाहिए, even though I run an academy, I have a full-fledged offline classroom जिसके अंदर इस एग्जाम का बैच पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ है. I would like to tell you, it is almost akin to asking someone कि क्या फिजिक या बॉडी घर पे बनती है कि नहीं. हाँ बनती है, कि मतलब जिम जाना कंपलसरी है कि नहीं. सो कोचिंग अकेडमी इज जस्ट लाइक अ जिम. इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू whether you want to join a gym or whether you want to do 500 push-ups a day, daily almost on a very regular consistent basis. जिम का अपने एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट के प्रोज हैं और कॉन्स हैं. लाइक आई टोल्ड यू, एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, एंड सेल्फ प्रिपरेशन के अपने प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं. सो दैट इज absolutely dependent on you as to what do you want in life. And then there is the online mode. Online mode saves you time and money, both. How does it save you time? Primarily because those are pre-recorded lectures. They are very to the point. They get you in and out of the topic very quickly. However, an offline class takes much more time because बीच में प्रवचन शुरू हो जाते हैं, या बीच में थोड़ी सी इंटरेक्शन होती है, कोई डाउट पूछता है, ब्रेक ली जाती है. सो ऑफलाइन और अच्छा चेहरों से काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होता है कि इनको समझ में आया कि नहीं आया. Online is best for those people who just want help and who just want help with self preparation. All right. So if you're considering all of that, I'll leave the links to that in the pinned comment down below. Otherwise, if you're preparing on yourself, absolutely it is absolutely okay. This exam can very well be prepared on your by yourself and on your own.
ऑलराइट। तो 25 जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे PGQP 40, so in 22 and in 23 let's just have a look, so you'll get a fair idea of what you know what to do basically, what to expect in the question paper. 22 में क्या हुआ था, 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के आए थे, 10 इन कंप्यूटर्स, 20 इन जीके एंड सीए, 25 in maths and 20 in logical, and constitution is included whenever I say GK and GK के अंदर constitution is always included. So ये 100 क्वेश्चन का आपका कॉम्बो बन गया, 50 right. So calculation is correct. In 23, alright, so this was a fairly split question paper in 22 because I designed mocks on it. So मैंने वहाँ से अभी भी अपना एक मॉक खोल के स्प्लिट देखी थी कि मैंने कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस डाले थे, to follow the question paper as quickly as and closely as possible. You would like to start your mocks in somewhere in mid of December and take it till Feb end. Otherwise Jan and Feb mock से भी आप भर देंगे, basically practice out कर देंगे. Roughly speaking, I think ideally speaking you should target 3K to 4K questions. 3K for example will be there in our mock series later on. However, you'll need to practice questions from books. As long as you're practicing these many questions from whatever sources that you want to refer to, from whatever mock test series of any academy, not ours, not compulsorily or necessarily ours, any damn academy that is there, this is the amount of questions. Around 3K questions will give you a very fair idea कि आप कितने पानी में तैर रहे हैं, and will give you a fair assessment as well that whether you'll be clearing this exam or not, and based on your reservation category or whether you belong to the unreserved category. Alright, so in 23 you got 20 questions from English, you got 9 from computers, you got 19 from CA and GK. Now this calculation varies, ऊपर नीचे होती रहती है, कई लोग इसको मतलब नहीं क्लासीफाई करते कंप्यूटर्स में, तो जीके में बढ़ा देंगे या यहाँ का कोई क्वेश्चन, बेसिकली लेट अस फॉर आवर डिस्कशन सेक विल जस्ट गेट टू दैट. 52 आए थे मैथ्स एंड लॉजिकल से, तो कई लोग कहते हैं अरे ये तो लॉजिकल नहीं है, तो मैथ्स है, मैथ्स एंड लॉजिकल, सो आई हैव कंबाइंड इट, सो 52. तो मतलब स्टूडेंट्स का देखने का अलग अलग तरीका होता है, बट हाउएवर जस्ट रफली स्पीकिंग 20 फ्रॉम इंग्लिश, यहाँ 25 थे, 10 फ्रॉम कंप्यूटर्स ऑन एन एवरेज इज बीइंग फॉलोड, 20 फ्रॉम सी एंड जीके. जीके में यहाँ पे मेनली वो स्टैटिक जीके, and 50 questions from maths and logical, यहाँ 45 थे. ठीक है जी. तो roughly speaking the paper split is the same. It is absolutely the same, and you have what, 5 months to prepare, right? 4.5 to 5 months. You have 5 topics to prepare. जब law आती थी तो it was absolutely unfair in fact, and that is why thanks to the tedious nature of this exam, an entire industry mushroomed to tackle this exam because there was a demand, so of course there will be a supply. It is just basic economics. And now since law has been removed for now because there is no code for a 3-year LLB, but however CUET UG में legal studies का पेपर आता है और बड़ा दमदार और बड़ा शानदार आता है on lines of DULLB पहले ही. So if they ever go to that route, they will most likely follow their CUET UG वाला फंडा and will be pretty much will be pretty much following the legal studies वाला formula under UG. However, we'll just keep on focusing on PG here. Alright, so ये सारा का सारा सिनारियो. अब आप देखिएगा कि अगर 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आए, 10 कंप्यूटर के आए, 20 करंट अफेयर्स जीके के आए और 50 मैथ्स एंड लॉजिकल के आए, whether you'll be able to calmly, coolly tackle out around 60 out of 100, I'm talking about UR. And which topics will you be deriving 60 out of? Let us say that you manage 25 only from here. Well, you have your task cut out to get 35 out from here. Let us say that you get 10 here, and let us say that you get 5 here, 10, 15, and then let us say that you get 15 here. तो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को मतलब कैसे आप इसको स्प्लिट करके कट ऑफ क्लियर करें, क्योंकि इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे फिर जब आप एग्जाम ये वाला क्लियर कर लेते हैं तो सब लोग पूछते हैं भाई सीट आ गई कि नहीं आई, क्योंकि इसका स्कोर कौन पूछ रहा है, राइट? अंदर का फिर स्कोर स्टार्ट्स मैटरिंग. ऑलराइट, सो सिंस द मेजॉरिटी चंक ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज मैथ्स एंड लॉजिकल, why not set a personal target till 31st December to complete maths and logical first and foremost,
and keep a track of current affairs. Now, if you're self-preparing, well, then there are multiple channels on YouTube that do a daily analysis of each and every newspaper that exists in India, and that is very good for competitive exams. You can pretty much follow those channels and get your current affairs sorted out. Absolutely not a problem at all, right? And maths and logical, आप अपना टारगेट जो कि स्टैंडर्ड जो किताबें आती हैं जो बाज़ार में आपकी RS अग्रवाल एंड स्टैंडर्ड वही 8वीं 10वीं कक्षा की जो एग्जाम है, बट आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए MCQ बेस्ड किताबें काफ़ी सारी आ गई. एडवांस लेवल क्वेश्चंस उसमें बहुत सारे होंगे, डरिएगा घबराइएगा मत. यहाँ एडवांस लेवल क्वेश्चंस पूछे नहीं जा रहे हैं. जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर वंस, यू विल फिगर आउट कि नॉर्मल मतलब लेवल बड़ा नॉर्मल है इस पेपर का. सो 31 दिसंबर को ये वाला काम हुआ है, ठीक है जी. 31 दिसंबर तक ये काम आप अपना निपटा लीजिए. जनवरी में भी अगर आप इंग्लिश अगर आपकी ठीक ठाक है तो इंग्लिश आप वैसे ही इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ऑन, एट, फॉर, कैरियर्स, ए एंड द कहाँ पे क्या लगाना है, वोकैब थोड़ी सी हमेशा स्ट्रेंथन आउट करनी पड़ती है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. पीपल टेक इंग्लिश वेरी लाइटली, बट यू नो दोज आर लाइक फ्री के 80 मार्क्स. ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर टफ आ गया, मान लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 हटा दिए, तो फिर भी 15 नंबर जो हैं आपके, ऑलमोस्ट 60 numbers are there, 60 marks are there to you on a platter. So always try to score as many marks as you can out of the 60. And then you can couple out your computer की preparation यहाँ पर, right? तो इंग्लिश और कंप्यूटर्स आपके यहाँ पर आ गई, और यहाँ से आप 2 महीने लास्ट में, क्योंकि स्टैटिक जी के लोग भूल जाते हैं, यहाँ पे स्टैटिक जी के क्लब आउट कर लेते हैं. ये आप अपने ऑलमोस्ट 1 मार्च तक का टारगेट रख लीजिए. अगर लॉ का कुछ आता जैसे टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो, तो मैं कहता जी नहीं अभी ये करिए, टाइम कम है, ये है वो है. इसमें टाइम कम नहीं है. दिस इज प्रीटी मच इट एज ऑफ टुडेज सिलेबस. द फाइनल सिलेबस एक्सेट्रा दे विल टेल यू इन जनवरी, बिकॉज जनवरी में फॉर्म खोल देंगे, या दिसंबर में भी फॉर्म खोल सकते हैं, क्योंकि यूजुअली इस साल जो फॉर्म खुले थे दे गॉट ओपन आई थिंक समवेयर इन मार्च आफ्टर द 20th of March etc. after they notified the syllabus. So they usually open the form for 2 months. So if the exam is in March, Jan-Feb में फॉर्म खुले होंगे, और फिर पोस्टपोनमेंट नहीं होगी. एक डेडलाइन दी जाएगी आपको मोस्ट लाइकली एंड ऑफ फेब की, और उसके बाद ये एग्ज़ाम करा लिया जाएगा. एंड देन DU विल टेक इट्स एडमिशन इट्स ओन स्वीट टाइम समवेयर इन जुलाई अगस्त के आसपास. जुलाई में बेसिकली जुलाई और अगस्त के थ्रू आपकी काउंसलिंग वगैरह ये लोग करके सेशन स्टार्ट कर देंगे. मोस्ट लाइकली दे स्टार्ट इन अगस्त, तो जुलाई में आपकी काउंसलिंग कर देंगे. और क्योंकि पेपर हो चुका होगा, सो दे रियली विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम. पहले हमेशा ये लोग UG के एडमिशन्स करते हैं, बट इस बार CUETPG पहले हो चुका होगा, सो गॉड ओनली नोज व्हाट हैपेंस इन 2024. या सो दिस इज प्रीटी मच द प्लान. टेक इट कामली, कूलली. दिस इज अ नॉर्मल पेपर. कोई हवा भरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे बाप रे ये होगा वो होगा. ये very basic question paper. I've shown you all the ingredients. You know what to do with this exam. You pretty much know that there is more than sufficient time. And yeah, multiple resources available on YouTube. Multiple people must be teaching for this exam, including us. You want to join any of our programs, the links are in the description. You want to self-prepare, it's absolutely fine. You can do so, and perhaps very well do so as well. And nothing much more to talk about this exam. That is why I usually am not making multiple videos on this exam like I used to in the DULLB days. But well, that era is long gone now. And yeah, that's pretty much it. I have nothing much more to add. If you need to ask anything, if it is a sensible question, leave it in the comments below. I will try to answer to the best of my capability and knowledge as of right now. I wish you all the very best, because do not delay. This is my final message. Just do not delay your prep, because ठीक है, end में you will find many people saying यार तो 2 हफ्ते में हो जाता है. Like many people who have attempted the exam, not talking about any other person here, just कि हाँ 2 हफ्ते में हो जाएगा, 3 हफ्ते में. Now मेरा 5 नंबर का चश्मा जो 6 नंबर का चश्मा है, maybe if I give it to you, you may not be able to see it very clearly. Why this? Because each and every person's requirement differs. क्योंकि स्कूल में टॉपर होते थे जो कहते थे हाँ बस एक रात पहले पढ़ लिया सब हो गया, 95% प्लस आ रहे हैं, और कई लोग होते थे पूरा साल भी पढ़ के आए 70 क्रॉस नहीं हो रहे. तो आप डिसाइड करिए कि आप कौन हैं. तो जब आप कौन हैं तो उसके अंदर आप ये डिसाइड करें कि आपकी क्या ज़रूरत है. अब वो केवल आप जान सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम है. एंड ऑफ कोर्स आई डू नॉट नो यू, यू डू नॉट नो मी फुल्ली, एंड आई कैन नॉट असेस कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है.
अच्छा, फिर कौन सी कोचिंग, कौन सा टीचर? सारी कोचिंग अच्छी हैं, सारे टीचर अच्छे हैं। जौन सा जो आपकी अंतरात्मा में जहाँ यस आए, आप केवल वहाँ जाएं। और इस साल टाइम है नहीं इधर उधर घूमने का। जो यूजली पीपल यूज टू वेक अप फॉर दिस एग्जाम इन डिसम्बर, यू हैव टू वेक अप राइट नाउ इन सितंबर ओनली। सितंबर खैर खत्म ही है 3 दिन में, तो अभी अगर जाग जाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो जाएगी। यू विल बी एबल टू टेक अ फेयर शॉट एट एंड मोस्ट लाइकली सिक्योर अ सीट। That's just about it, and that's what I hope for as well. All right, and I wish you all the very best. Let's conclude this session here.